Honorable Prime Minister has now arrived at the venue, and Honorable President of South Korea is being received by the Prime Minister. Honorable President of South Korea being received and greeted by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath. Prime Minister introducing the dignitaries to the Honorable President of South Korea. Both the leaders being received and greeted by the dignitaries. Honorable President of South Korea and Prime Minister Shri Narendra Modi would be here in the auditorium where the launch ceremony will be held in a few minutes from now. Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, and other dignitaries present, leading the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the Honorable President of South Korea, Moon Jae-in, to the auditorium, to the launch ceremony. Today, India's credibility is stronger than ever. There is visible momentum, energy, and optimism. And Make in India is opening investment doors. Multiple enterprises today are adopting its mantra. And the world's largest democracy is well on its way to becoming the world's most powerful economy. And today's event is a true representation of the same. In a short while from now, both the leaders would jointly inaugurate the Samsung factory located in Noida, Uttar Pradesh, which is one of the world's largest, with a production capacity of 120 million units a year.
And this launch of the new Samsung unit would provide a major impetus to the Make in India initiative. This investment by Samsung in Noida plant as a major production hub would create about 5,000 new jobs. Besides the factory in Noida, Samsung also has a production unit in Sri Perumbudur and 5 R&D centers and 1 design center in Noida, employing over 70,000 people. With a R&D center being located in India, Samsung will bring some local features to the devices powered by the R&D here. In the audience, senior members of Samsung, South Korean cabinet members and industry captains waiting for the beloved leaders to inaugurate the world's biggest mobile factory and open it up to the world. The event that we are witnessing today is a result of the Make in India initiative, through which the obsolete and obstructive frameworks of the past have been dismantled and replaced with a transparent and user-friendly system that is helping drive investment and build best-in-class manufacturing infrastructure. The Indian embassies and consulates have also been communicated to disseminate information on the potential for investment of the identified sectors as a part of the Make in India initiative. Korea Plus was launched in June 2016, which facilitates fast-track investment proposals from South Korea and offers holistic support to Korean companies wishing to enter the Indian market.
Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and Honorable President of the Republic of South Korea, Moon Jae-in, being led to the auditorium where the launch ceremony will be held in a few minutes from now. And it's now the time for the much-awaited moment of the inauguration of the Samsung's world's largest mobile factory in Noida, Uttar Pradesh. Good evening, ladies and gentlemen. Namaste. 안녕하세요. My name is Jia Kim, and I will be your host for the evening. On behalf of Samsung, it is my great pleasure to welcome Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, President of the Republic of Korea, His Excellency Moon Jae-in, Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, Vice Chairman of Samsung Electronics, J.Y. Lee, CEO of Samsung India, H.C. Hong, and all of our special guests and dignitaries to Samsung Noida, the largest mobile phone factory in the world. Your visit here today marks a new chapter in the long history that unites Korea and India and serves as a foundation for Samsung's relationship with India. As we look to the future, it is worth recognizing and celebrating our shared past. This is the story of our bond, our bandhan, or as we say in Korea, our inyeon. Let's have a look. Bandhan or inyeon, a connection that's destined to be made. According to legend, a bandhan was formed when a princess from Ayodhya went to Korea. This union ushered in an era of co-prosperity. In 1995, Samsung made the momentous journey to India and further cemented the bond between the countries. In the years that followed, this bandhan touched millions of hearts. Over the past 23 years, Samsung has crossed many milestones on its way to the top. Samsung has set up 2 factories, 5 R&D centers, 1 design center, created jobs and partnered with over 150,000 retailers. In support of the government's Make in India program, Samsung launched the Make for India initiative in March 2015. With this, we contributed to several government initiatives. Making the digital India dream bigger, Samsung built the 4G LTE network for Reliance Jio, the world's largest mobile data network. As India went cashless, Samsung Pay was launched, designed to serve all payment technologies. Samsung Smart Class in Navodaya Vidyalaya schools have brought modern technology to children in rural India.
In support of Skill India, Samsung technical schools were set up with the endeavor to empower young girls, bolstering the Beti Bachao Beti Padhao movement. Furthermore, with a network of over 3,000 service centers and 535 service vans, Samsung takes care of its customers even in the remotest villages of India. And now, we have come to our biggest milestone yet, the world's largest mobile factory. With this new factory, Samsung will increase production capacity from the current 68 million phones a year to a record 120 million phones by 2020. To further strengthen this bond, Samsung will make India an export hub, deepening its commitment to India. As you just saw, the bond that unites India and Korea is incredibly unique, and Samsung is committed to advancing this strong partnership. To chart this vision for Samsung, it is my great pleasure to invite on stage Mr. H.C. Hong, CEO of Samsung India. 안녕하십니까? Good afternoon, Honorable Prime Minister Narendra Modi, President Moon Jae-in, and distinguished guests. Thank you for gracing the dedication ceremony of the Samsung Noida new factory with your presence. The completion of the Noida new factory was made possible by the generous support of the Government of India and the state government of Uttar Pradesh, as well as the close partnership between India and Korea. Marking its 23rd anniversary of business in India, Samsung will do its utmost to contribute further to the mutual development of the IT powerhouses India and Korea and for shared growth among our partner businesses. Once again, we express our deepest appreciation to the governments and businesses of both countries for your support, and particularly to President Moon Jae-in and Prime Minister Narendra Modi for your presence. Thank you. Thank you, Mr. Hong, for sharing your inspiring remarks with us today. Ladies and gentlemen, our next speaker is a visionary leader who is accelerating growth and development in the state of Uttar Pradesh and rapidly turning it into a world-class hub for investment, technology, and manufacturing. Please join me in welcoming on stage Chief Minister Yogi Adityanath. भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोरिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री मून जे-इन जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस प्रेसिडेंट श्री जे-वाई ली, एवं आज के इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, आज का यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके संरक्षण में कोरिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री मून जे-इन तथा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स
द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में किए गए विश्व के सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कोरिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साउथ कोरिया और उत्तर प्रदेश का एक भावनात्मक हुआ है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिनके प्रयासों से सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के बीच में मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंधों की एक नई शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब मार्च 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व के लिए भेजा, उस समय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी इस यूनिट को देश के अन्यत्र ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था और उस समय मैंने इस बारे में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस प्रेसिडेंट को आमंत्रित करके उनसे पूछा था कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या समस्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश शासन के नीति और वहां के नियमों के अंतर्गत जो भी सुविधा होगी उत्तर प्रदेश उस प्रकार की सुविधा देगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एमओयू साउथ कोरिया की इस कंपनी ने किया था, जून 2017 में यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और एक वर्ष के अंदर इस 4,915 करोड़ रुपए के निवेश के इस कार्यक्रम का आज लोकार्पण कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में कोरिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में 35,000 से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का जो प्रस्ताव है, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें मदद की। प्लांट के लिए 50 मेगावाट का सबसे बड़ा बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, 4 महीने की रिकॉर्ड अवधि में 22 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन को यहां पर पहुंचाने, उसको ऊर्जीकृत करने का कार्य प्रदेश सरकार ने यहां पर संपन्न किया। मुझे प्रसन्नता है कि सैमसंग की इस इकाई में 6,000 लोग सेवायोजित हैं। नई इकाई के से लगभग 2200 अतिरिक्त लोगों का यहां पर सेवायोजन होगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने यह संदेश देने का सफल प्रयास किया है कि हम प्रदेश के रोजगार सृजन हेतु निवेशकर्ताओं को किए गए वायदे को पूरा करने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से कोरिया गणराज्य के निवेशकों को प्रदेश में अपने उद्यम की स्थापना हेतु सादर आमंत्रित करता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी पहल और प्रयासों में राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ सहयोग करेगी। एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कोरिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा आप सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Chief Minister, for those wonderful remarks. We are incredibly grateful for your support and look forward to working with you to bring a new wave of prosperity to Uttar Pradesh, starting right here in Samsung Noida. My friends, I am honored to invite on stage a truly transformative leader. Through programs like Make in India, Digital India, and Skill India, he has brought a new dynamism to India's economy, powering the dreams of hundreds of millions across India. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the stage the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji.
राष्ट्रपति और मेरे मित्र श्रीमान मून जे इन, सैमसंग के वाइस चेयरमैन जे ली, कोरिया और भारत के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी महानुभाव, अपने मित्र प्रेसिडेंट मून के साथ नोएडा में बनी सैमसंग की इस फैक्ट्री में आना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की नई यूनिट भारत के साथ ही ये उत्तर प्रदेश और नोएडा के लिए भी एक गर्व का विषय है। इस नई यूनिट के लिए सैमसंग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में आज का ये अवसर बहुत ही विशेष है। 5,000 करोड़ रुपए का ये निवेश न सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत और कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा। सैमसंग का ग्लोबल R&D हब भारत में है और अब ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हमारा गौरव बढ़ाएगी। साथियों, जब भी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मेरी बातचीत होती है तो एक बात मैं अक्सर कहता हूं, भारत में ही शायद ही ऐसा कोई मिडिल क्लास फैमिली होगा, मिडिल क्लास घर होगा, जहां कम से कम एक कोरियाई प्रोडक्ट आप वहां नजर ना आए। ऐसे शायद ही कोई परिवार होगा। निश्चित तौर पर भारतीय लोगों के जीवन में सैमसंग ने अपना विशेष स्थान बनाया है। खासतौर पर आपके फोन, तेजी से बढ़ रहे स्मार्टफोन मार्केट में आज वर्ल्ड लीडर हैं। सैमसंग की लीडरशिप से जब भी मेरी बात हुई है तो हमेशा मैंने उन्हें भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया है। आज नोएडा में हो रहा यह आयोजन इसी का एक प्रतिबिंब है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी सामान्य नागरिक के जीवन को सरल बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। आज भारत में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन उपयोग में है। 32 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम दर पर इंटरनेट डेटा उपलब्ध है। देश की 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। ये सारी बातें देश में हो रही डिजिटल क्रांति का संकेत है। साथियों, सस्ते मोबाइल फोन, तेज इंटरनेट, सस्ते डेटा के चलते आज फास्ट और ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित हुई है। बिजली पानी का बिल भरना हो, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, प्रोविडेंट फंड हो या पेंशन, लगभग हर सुविधा ऑनलाइन मिल रही है। देश भर में फैले लगभग 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांव वालों की सेवा में काम कर रहे हैं। तो शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट गरीब मध्यम वर्गीय युवाओं की आकांक्षाओं को नई उड़ान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैम GEM जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट के जरिए
सरकार अब सीधे प्रोड्यूसर से सामान की खरीदी कर रही है। इससे मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी लाभ हुआ है, तो सरकारी खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। साथियों, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन निरंतर बढ़ रहा है। भीम ऐप और रुपे कार्ड से ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान हुआ है। जून महीने में, मैं सिर्फ अभी जून महीने की बात करता हूं, जून महीने में ही लगभग 41,000 करोड़ का लेन देन भीम ऐप से हुआ है, 41,000 करोड़ रुपयों का। आज भीम और रुपए को लेकर देश ही नहीं, दुनिया भर में उत्सुकता है। कुछ दिन पहले सिंगापुर में भी इन दो सुविधाओं को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला। ऐसे में आज हो रहा ये आयोजन भारत के नागरिकों के एम्पावरमेंट में योगदान तो देगा ही, मेक इन इंडिया की मुहिम को भी ये गति देगा। साथियों, मेक इन इंडिया के प्रति हमारा आग्रह सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा पर नहीं है, बल्कि ये कोरिया जैसे हमारे मित्र देशों के साथ रिश्तों का भी शुभ संकल्प है। ये सैमसंग जैसे ट्रस्टेड ब्रांड को नए अवसर देने के साथ ही दुनिया के हर उस कारोबारी को खुला आमंत्रण है जो न्यू इंडिया के नए और ट्रांसपेरेंट बिजनेस कल्चर का लाभ उठाना चाहता है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ता हुआ नियो मिडिल क्लास निवेश की असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि इस इनिशिएटिव को आज दुनिया भर से स्वागत हो रहा है, सहयोग मिल रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीते 4 वर्षों में फैक्ट्रियों की संख्या, मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर के 120 हो गई है। और खुशी की बात है कि जिसमें से 50 से अधिक तो सिर्फ और सिर्फ यहां नोएडा में है। इससे 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला है। रोजगार निर्माण में भी सैमसंग की अग्रणी भूमिका रही है। पूरे देश में लगभग 70,000 लोगों को आपने सीधा रोजगार दिया है, जिसमें से लगभग 5,000 यहां नोएडा में है। इस नए प्लांट से 1,000 और लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मुझे बताया गया है कि यहां बनी ये यूनिट कंपनी की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। यहां हर महीने लगभग 1 करोड़ फोन बनेंगे। महत्वपूर्ण ये भी है कि यहां जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 30% एक्सपोर्ट होगा, दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा। निश्चित तौर पर इससे ग्लोबल मार्केट में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। यानी कोरिया की टेक्नोलॉजी और भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट से दुनिया के लिए हम बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। यही हम दोनों देशों की ताकत है और यही हमारा साझा विजन है। एक बार फिर सैमसंग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे आज यहां आमंत्रित किया, इस अवसर का हिस्सा बनाया,
इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister. That was incredibly powerful. We will continue to seek your guidance and support as Samsung works to make in India, make for India, and make for the world. Our next speaker assumed office at a critical point in Korea's history and has fast emerged as one of the most consequential and well-known leaders today. He has inspired the world through his efforts to bring peace and prosperity to the Korean peninsula and has demonstrated his firm commitment to elevating ties with India. He is a friend of India and a true leader in Asia. Please join me in welcoming to the stage the President of the Republic of Korea, His Excellency Mr. Moon Jae-in. 삼성전자와 협력사 Executives and 임직원 employees of Samsung Electronics and its supplier companies, I congratulate you on the completion of the new plant. I commend the relevant officials on their hard work. India is the most dynamic country in the world. And I'm truly delighted that Korean companies are also taking part in this fast-paced growth of India. Attending this inauguration ceremony of a world-class plant today and celebrating the fruits of economic cooperation between our two countries with Prime Minister Narendra Modi, while blessing the future of shared growth and prosperity together, the joy I come to feel is even more special. In every corner of this plant that was born anew, we can feel the sweat, passion, and pride of countless people. Now, Samsung Electronics has the #1 market share in the Indian smartphone market, being the most trusted brand for 2 consecutive years. Thus far, executives and employees of Samsung Electronics and its partners have endeavored ceaselessly to win the love of the people of India, and that endeavor was accepted and recognized by the people of India, to whom I want to express my appreciation and respect. Executives and employees of Samsung Electronics and its suppliers. Now the Noida plant, needless to say, has become Samsung Electronics' largest smartphone manufacturing plant. Just as so, the expectations placed by Indians and Koreans have become that much greater. As the Noida plant gains greater vigor going forward, the economies of India and Korea will advance further together. Products this plant manufactures embody the efforts and technologies of around 50 parts suppliers from India and Korea. With the completion of the new Noida plant, the small and mid-sized part suppliers can now leverage opportunities to create even more jobs and exports. There will be more jobs for the Indian people as well. At this new plant alone, over 2,000 new jobs will be generated. And taking into account the local supplier base in India, the impact on job creation will become even more significant. I hope that smartphones produced from the Noida plant will be exported to third countries such as those in the Middle East and Africa, so that the fruits of bilateral economic cooperation can become more abundant. For the Noida plant that unveils today to serve as a symbol of win-win cooperation between India and Korea, the Korean government will also do its utmost to provide necessary support. His Excellency Prime Minister Modi, distinguished guests, today I have felt once again that India and Korea truly are the best companions for each other.
India's young generation under the age of 35 comprise 65% of the entire population. As such, it is a young, enterprising country. India also has a great passion for education, and its ability to embrace new cultures and innovate is greater than any other country. India has a spiritual tradition and grand imagination that serve as the foundation for source technologies in diverse fields such as IT and aerospace. And India also boasts a software workforce of the highest caliber. Korea, too, is a country of dynamism and relentless challenge. With passion for learning, creativity, and a formidable spirit of challenge, we achieved remarkable development. Korea is especially strong in commercial technology and hardware. India and Korea are alike in many ways and have mutually complementary strengths, which will further reinforce our cooperation. We will most certainly be of keen assistance to one another. Executives and employees of Samsung Electronics and its supplier companies. The state of Uttar Pradesh, where we are standing today, was formerly the home of the Queen of King Kim Suro, Queen Ha Hwangho, who came to Kaya 2,000 years ago from the kingdom of Ayodhya. Korea's ancient kingdom of Kaya boasted the greatest iron-making technology at the time, and for over 500 years developed the most splendid iron culture of all of Northeast Asia, right on the southern parts of the Korean peninsula. Furthermore, Kaya was where Buddhist culture that was introduced by way of India flourished. Standing here at the Noida plant, I think back to how India and Korea first met all those years ago, as well as the treasured ties and the splendid civilizations that we both had. Now, here at the Noida plant, smartphones will be mass-produced to lead the IT civilization for both India and Korea. The sweat that the Korean and Indian workers will together shed will go down in the history of our bilateral friendship and prosperity as yet another milestone achievement. You have all done enormous work. Thank you. Thank you, President Moon. We at Samsung are committed to helping you promote shared prosperity between Korea and India. And now, ladies and gentlemen, in the presence of Prime Minister Modi and President Moon, I'm honored to unveil our new production line, another historic milestone in advancing our partnership with India. I now ask our guests of honor to move toward the factory line where Prime Minister Modi and President Moon will cut the ribbon and usher in a new era of success and co-prosperity. 테이프 커팅을 위해서 자리를 이동하시기 바랍니다. 테이프 커팅은 문재인 대통령님과 모디 총리님 두 분만 단상 위에 올라가시겠습니다. Jae-in will be doing the honors of ribbon cutting. For the other VIPs, please remain below the stage and give your congratulations to the two leaders. Again, on the stage, we'd like to invite the Prime Minister Modi and President Moon on the stage. As for the other VIPs, please remain below the stage. In the audience, please look toward the LED screen. Please hold up the scissors and pose for the camera. And now, please get ready to cut the ribbon as I count down from 3. 저의 카운트다운에 맞춰 잘라주세요. Please cut when I count down. 2, 1.
ready to unveil the world's largest mobile phone factory, our delegates have turned around to face the screen. President Moon will enter the production line. May our dignitaries return to your seats. May our dignitaries return to your seats. And I ask everyone in the audience to take their seats. Prime Minister Shri Narendra Modi and the President of the Republic of Korea will now take a tour of the new production line. The factory is a true representation of India and its efforts through Make in India. Both leaders will now be taking a tour of the new production line inaugurated. Established in 1995, Samsung India laid the foundation stone of the Noida plant next year. In 1997, production commenced and the first television was rolled out. In 2003, refrigerator production began, and by 2005, Samsung had become market leader in panel TVs, and in 2007, the existing Noida facility started manufacturing mobile phones. The company currently has over 10% of its overall production in India and aims to take it to 50% over the next 3 years. Prime Minister Shri Narendra Modi and President of the Republic of Korea taking a tour of the new production line and having a look at the state-of-art technology being employed here in the new factory. The new 35-acre Samsung Electronics facility can manufacture nearly 120 mobile phones. This makes this Samsung plant the world's biggest mobile factory. Both the leaders signing the Galaxy S9 mobile handset This is indeed a memorable moment for the entire team Samsung. India is a huge market of opportunity. And with Make in India, India
has now emerged as one of the most preferred partners. Excuse me, please come side. And there's perhaps no stronger illustration of that than Samsung, the world's biggest phone maker, opening the world's biggest phone factory in India. Group photo of the dignitaries and Samsung officials being taken with both the leaders, Honorable Prime Minister of India and President of the Republic of Korea and Chief Minister of Uttar Pradesh, where the satellite city of Noida is located and where the biggest mobile factory has been opened by Samsung. The people present here not able to hide their smiles with the kickoff of the new facility at Noida, Uttar Pradesh in India.